Good morning, my dear students. Welcome back once again in my class. How are you all? I hope you all are doing well at your home. My dear students, in the previous video, we have studied the story of Four Little Rabbits, which was written by Beatrix Potter. And we know that the name of four little rabbits were Flopsy, Mopsy, Cottontail and Peter. Peter was very naughty rabbit, and we have completed up to page number 16. Now we are going to continue this story in this video. Let's start. Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed, perhaps hidden underneath a flower pot. He began to turn them over carefully, looking under each. Soon Peter sneezed. Crash-hoo! It is the sound of Peter sneeze. Now Mr. McGregor was after him in no time and tried to put his foot upon Peter, who jumped out of a window, upsetting 3 plants. The window was too small for Mr. McGregor, and he was tired of running after Peter. He went back to his work. Then Peter sat down to rest. Again, he was out of breath and trembling with fright here, and he had not the least idea which way to go. My dear students, here now Peter got confused. Where is the way to home? He has no idea in which way he have to go. Here, when Mr. McGregor came after Peter, then at that time Mr. McGregor was quite sure when the Peter jumped into a cane, then Mr. McGregor was quite sure that Peter was somewhere in the tool shed. Then where is tool shed? Perhaps hidden underneath a flower pot. He thought that Mr. McGregor thought that somewhere in the tool shed, or perhaps hidden underneath a flower pot. Then he began to turn them over carefully, looking under each. Then Mr. McGregor looked inside the tool shed as well as underneath a flower pot. Then again he looked under each one by one in the tool shed and underneath a flower pot. Soon, अचानक से, जल्दी से, Peter sneezed. Sneeze means छींकना. आवाज आई. Kershoo means it is the sound of a sneezed. Mr. McGregor was after him means McGregor Peter के पीछे थे, and in no time and tried to put his foot upon Peter. Then Mr. McGregor चाहते थे कि वो अपने पैरों तले पीटर को दबा दे. Then again who jumped out of a window. Then Peter tried to jump out of a window. Then he means Peter upsetting 3 plants. He jumped. Then the window was too small. जो खिड़की थी वो बहुत छोटी थी. And for McGregor, Mr. McGregor, वो जो खिड़की थी Mr. McGregor के लिए बहुत ही छोटी थी. And he was tired of running after Peter,
और मिस्टर मैग्रिगर पीटर के पीछे दौड़ना चाह रहे थे. He went back to his work. When he did not find the Peter, Mr. McGregor went back to his work. After that, Peter sat down to rest. When Peter quite sure that nobody is coming before him, then Peter sat down for rest. He was out of breath and trembling with fright. डरा हुआ था. And he had not the least idea which way to go. और पीटर को कोई भी आइडिया नहीं था उसे किधर जाना है. Now let's continue the story. Next paragraph. After a time he began to wander about, going lipty, not very fast, and looking all around. He found a door in a wall, but it was locked, and there was no room for a fat little rabbit to squeeze underneath. When Peter had no idea to go to which way he had to go. So after that, a time he began to wander about when he was feeling tired, थक गया था. Then going lipty means now Peter was walking slowly, not very fast. Lipty means धीरे, not very fast. And looking all round. Then उसे एक दीवार मिला. But it was locked. वो locked था, बंद था. And there was no room, और वहाँ कोई भी कमरा नहीं था. For a fat little rabbit, एक मोटे रैबिट के लिए, ताकि वो नीचे से जा सके. An old mouse was running in and out over the stones. You know that, my dear student, there was no space to go underneath, to squeeze underneath little rabbit, and an old mouse was running in and out. And Peter saw that there an old mouse was running in and out over the stone at drop set. Then Peter ने देखा कि एक बूढ़ा चूहा वहाँ बार अंदर आ रहा है और जा रहा है. वहीं पे एक पत्थर दरवाजे के पास रखा हुआ है. पीटर ने ये भी देखा कि जो वो बूढ़ा चूहा है उसके मुंह में एक मटर का दाना भी है और बीन्स भी है. After here carrying peas and beans to her family in the wood, Peter asked her the way to the gate. Then Peter ने उस old mouse से पूछा कि गेट का रास्ता कहाँ है. But she had such a large pea in her mouth, लेकिन उसके मुंह में इतना बड़ा मटर का दाना था कि वो कोई भी जवाब नहीं दे पाया, कोई भी आंसर नहीं दे पाया. But she had such a large pea in her mouth that she could not answer. Then he went back toward the tool shed. But suddenly, quite close to him, he heard the noise of a scratch, scritch. Then Peter heard the sound. जब पीटर को आंसर नहीं मिला चूहे द्वारा, तो पीटर फिर से टूल शेड के पास चला गया और जाके वहाँ पे क्वाइटली बैठ गया. लेकिन बाद में उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं. पीटर स्कैटर्ड मीन्स मूव हरीडली. जब पीटर को आवाज़ें सुनाई देती है, स्क्रिच स्क्रैच, दिस इज द नॉइज. ओके. देन पीटर स्कैटर्ड मीन्स मूव हरीडली. वो जल्दी से घूम गया, देखने लगा. अंडरनीथ द बुशेस, जो झाड़ियाँ थी वहाँ पे देखने लगा. बट सून एज नथिंग हैपेंड,
बट कुछ नहीं हुआ वहाँ पे। ही केम आउट, फिर पीटर जो है वो बाहर आ गया टूल शेड से, एंड क्लाइम्ड अपॉन ए व्हील बैरो एंड पीप्ड ओवर। व्हील बैरो एक गाड़ी होती है जो किसान के पास होती है, जिसमें वो अपने फल फ्रूट्स या फिर और भी खेती बाड़ी का सामान रखते हैं। वो पहिया, उसमें तीन या चार पहिए लगे होते हैं। उसी में जाके पीटर बैठ जाता है और पीप्ड ओवर मीन्स उसमें से वो झांकने लगता है। द फर्स्ट थिंग्स ही सॉ वॉज मिस्टर मैकग्रिगर। When Peter climbed upon a wheelbarrow and peeped, जब पीटर व्हील बैरो पे बैठ के और झांकता है तो जो सबसे पहला उसे दिखाई देता है दृश्य वो वह होता है कि वहाँ पे मिस्टर मैकग्रिगर होइंग अनियन को, प्याज को बोते रहते हैं या फिर पुलिंग आउट, निकालते रहते हैं उसको। होइंग मीन्स होता है निकालना, ठीक है। एंड हिज बैक वॉज टर्न टूवर्ड्स पीटर, एंड जो बैक था, जो मिस्टर मैकग्रिगर का पीठ था, वो पीटर के पीछे था। एंड beyond him was the gate, and here is now it is very very interesting that the first thing he saw was Mr. McGregor hoeing onion। पहला दृश्य क्या देखा? पहला देखा पीटर ने कि वहां पे मिस्टर मैकग्रिगर प्याज को निकाल रहे थे। फिर उसने देखा कि मिस्टर मैकग्रिगर प्याज को निकाल रहे थे और उनकी जो पीठ है वो पीटर की तरफ है। एंड बियॉन्ड हिम, और उनके पीछे ही गेट है जहां से पीटर निकल सकता है। देन पीटर गॉट डाउन वेरी क्वाइटली ऑफ द व्हील बैरो। देन पीटर बहुत ही शांतिपूर्वक व्हील बैरो के नीचे निकल आता है एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। जैसे ही पीटर व्हील बैरो से शांतिपूर्वक निकल के बाहर आता है, वो इतनी तेजी से भागता है जितनी तेजी से वो भाग सकता है, जितनी तेजी से भागने की क्षमता उसके अंदर है। अलोंग ए स्ट्रेट वॉक बिहाइंड सम ब्लैक करंट बुशेस, एंड सीधे रास्ते में उसको जब वो चल रहा था, देन ही गॉट दैट बिहाइंड सम ब्लैक करंट बुशेस एंड ही वॉक टुवर्ड द along a straight walk. After that, Mr. McGregor caught sight of him at the corner. उसके बाद मिस्टर मैकग्रिगर देखते हैं कॉर्नर से कि पीटर जा रहा है, बट पीटर डिड नॉट केयर। लेकिन पीटर को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा कि मिस्टर ग्रिगर उन्हें देख रहे हैं। ही स्लिप्ड अंडरनीथ द गेट। पीटर इतनी तेजी से भागते हुए गेट के अंदर गया और जाते ही वहां पे फिसल गया था। एंड वॉज सेफ एट लास्ट, और अंत में उसे लगा कि मैं सेफ हूँ इन द वुड आउटसाइड द गार्डन। देन पीटर नेवर स्टॉप्ड रनिंग। जैसे ही पीटर को ये आभास हुआ कि मैं अब गार्डन से निकल गया हूँ, अब मुझे मिस्टर मैकग्रिगर से कोई भी खतरा नहीं है, तो पीटर नेवर स्टॉप रनिंग। पीटर दौड़ना नहीं छोड़ा और वो तब तक दौड़ता रहा जब तक वो अपने घर में, जो बिग ट्री उसका घर था, जब तक वो वहाँ नहीं पहुँच पाया तब तक पीटर दौड़ता ही रहा। पीटर नेवर स्टॉप रनिंग और लुक्ड बिहाइंड, और पीटर पीछे भी नहीं देखा कि उसके पीछे मिस्टर मैकग्रिगर कॉर्नर से देख रहे हैं। मिस्टर मैकग्रिगर caught sight of him at the corner, but Peter did not care at all. He slipped underneath the gate and was saved at last in the wood outside the garden. Peter never stopped running or looked behind him till he got home to the big tree. My dear students, we have completed our revision of Peter Enters the Garden. I hope you all have understood this story once again, and this story was written by
Beatrix Potter. Beatrix Potter. Don't be confused. This story is written by Beatrix Potter. Now, I have given you homework. Fill in the blanks. I hope you all have completed your homework. The answer of your homework is Peter's siblings were Flopsy, Mopsy and Cottontail. And second, filling the blanks, question number 2. Their father ended up in a garden. Now, question number 3. Peter was a naughty rabbit. Now, fourth one. Peter lost one shoe among cabbages and other among potatoes. This is your homework. Now, fifth question. While running, Peter got caught in a gooseberry. My dear students, your homework is answer these questions with reference to the context. Your answer is question number 1. Your father had an accident there. He was put in a pie by Mrs. McGregor. This is the context. Here, referring to the context, your father had an accident there. Who was put in a pie by Mrs. McGregor? Your question is, who said these words and to whom? Question B, who is Mrs. McGregor? Question C, what do you think was the accident that their father had? Question 2, Peter got down very quietly off the wheelbarrow and started running as fast as he could. Your question A is, why did Peter get onto the wheelbarrow? Question B, what did he see from the top of the wheelbarrow? C, why did Peter start running as fast as he could? My dear student, this is your homework. I wish that you will try to do your homework at your home. Please do it. Now I am going to stop here. Thank you so much. God bless you.